Hello students, our today's topic is numericals based on resistivity. In the previous video, we have established a relation between resistance and resistivity, and today we will do some numericals related to or based on that expression. Okay, before attempting these numericals, we have to keep in mind one thing, that on changing dimensions of a conductor, resistance of the conductor changes, but resistivity do not depend upon the dimensions. इसका मतलब ये है, अगर हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हम डायमेंशंस चेंज कर रहे हैं, हम लेंथ को इतना बढ़ा रहे हैं, एरिया को इतना बढ़ा रहे हैं, then what will be its new resistivity? Then answer will be, the resistivity will be the same, because resistivity do not depend upon the dimensions of the conductor. Okay, so now let me start from the expression that we have derived in the previous video, and that relation was, or that expression was, R is equal to rho L upon A, where R is a resistance, rho is a resistivity, L is length, and A is area. Okay, now let me start with a numerical problem. A nichrome wire has a resistance of 10 ohm. Find the resistance of another nichrome wire whose length is 3 times and the cross section area or cross section is 4 times of the first wire. इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक वायर है नाइक्रोम की, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो गिवन है 10 ओम है, एंड हमें एक और वायर दी गई है सेम मटेरियल की, नाइक्रोम की ही, whose resistance is to be found, and they have given us that the length of this second nichrome wire is 3 times the first wire and the cross section is 4 times the first wire. It means say this is the resistance of the first wire, which is R rho L upon A. Let me consider this is our first equation. Okay, now for the second conductor, say we are considering according to the given data of the numerical problem. So according to the numerical, we have first nichrome wire whose length is L, area is A, and this is the expression for this conductor. And for the second conductor whose length and area are different from this conductor, length is 3 times and area is 4 times, and say its length is L dash and its area of cross section is A dash. For this conductor, let the formula is R dash. What we have to find out is this R dash. हमें इसकी resistance find out करनी है. इसकी resistance we are given that R is equals to 10 ohm. This is given in the question. Okay, so R dash we have to find out, and for R dash it will be rho L dash upon A dash. इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो L dash हमने, और L प्राइम हमने सपोज किया है, और इसकी जो एरिया है उसको हमने A डैश और A प्राइम हमने सपोज किया है. तो वन थिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट the length of this conductor is 3 times the length of this conductor. It means L dash is equal to 3 times the length of this conductor, which is L. So L dash is equal to 3L, and new area of this conductor is A dash, which is equal to 4 times the area of this conductor. So this will be 4A. Okay, now putting these values in this equation, then what we will get, R dash is equal to rho. Why the rho is same in two expressions? Because in both the cases the material of the wire is same. Both the wires are nichrome wires. So as we have studied, the resistivity is characteristic property of the material. Because of having same material, so resistivity will remain the same. It does not depend upon the length and area, or in other words, it does not depend upon the dimensions of the conductor. So इसकी लेंथ कितनी भी हो, इसकी लेंथ कितनी भी हो, तो resistivity will be same, because वो लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करती और वो डिपेंड करती है मटेरियल पे. मटेरियल दोनों केस में सेम है. दैट्स वाई यहाँ पे भी रो लिखा है, यहाँ पे भी रो लिखा है मैंने. ओके, सो R डैश इज इक्वल टू रो L dash. The value of L dash from here is 3L, and A dash, the value of A dash is 4A.
taking this 3/4 in front of this expression, and what we are left behind is rho L upon A. This is R dash. Now look at this, rho L upon A. Rho L upon A, from very first equation it is R. So 3/4 rho L upon A can be written as R from the first equation. Okay, this is R dash, and this R dash has to be find out. So 3/4, the value of R is also given in the statement, which is 10 ohm. So putting the value of this R, 3/4 into R, whose value is 10, on solving this we will get 7.5 ohm, because we have found the resistance, and the unit for resistance is ohm. That's why I have written over here the symbol of ohm. Okay, next question is, an aluminium wire has a radius 0.25 millimeter and length 75 meter. If the resistance of wire is 10 ohm, calculate resistivity of the aluminium. So what we are given is R is given, which is 0.25 millimeter. Converting it into the meter, so it will be 0.25. In place of milli, we can write 10 raised to power minus 3 मीटर. ओके, जब भी हम एक्सप्रेशन में पुट करनी होती है हमें वैल्यू, वो हम मीटर में करते हैं. दैट्स वाई हैव कन्वर्टेड इट इनटू मीटर. ओके, नेक्स्ट इज एंड लेंथ इज 75 मीटर. सो L इज गिवन 75 मीटर. ओके, if the resistance of the wire is 10 ohm, we are given capital R, which is the resistance, which is 10 ohm. Okay, calculate a resistivity of the aluminium. What we have to find out is the resistivity rho. We have to find out a resistivity from the relation R is equals to rho L upon A. We are not given this area directly, but we are given a radius of that wire. So the cross-sectional area of the wire, if this is a wire or a conductor, this cross-sectional area of the wire A, whose expression is pi r square. So pi r square is the cross-sectional area for the conductor. Okay, so we can write in place of A pi r square. Okay, and we are given this R. So we can rearrange this formula to find out this resistivity. On rearranging, this expression becomes R pi r square over L. ये पाई आर स्क्वायर को मैं यहाँ पे लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इस L को यहाँ पे नीचे पे ले, और ये एक्सप्रेशन हमारे पास बना. अब हमें इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है. जैसे R की 10 ओम, और इस पाई को हम 22/7 रख सकते हैं, और R विच इज़ गिवन 0.25 into 10 raised to power minus 3 and whole the square, because this is R square over this L which is 75. So हमें ये सॉल्व करना है कैसे. 22/7 3.14, multiply that with 10, and you have to square this 0.25 and multiply the number on what we get by solving this. उसको मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर हमें मिलेगा, एंड इसको सॉल्व कैसे करना है. 10 raised to power minus 3, इसका स्क्वायर कैसे करते हैं. पावर के साथ जो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, इट विल बिकम 10 raised to power minus 6. ओके, और इन सभी को जो सॉल्व करके आंसर 75 से डिवाइड करेंगे, एंड द फाइनल रिजल्ट विल बी दैट द रिजल्ट दैट यू विल गेट इज 0.0262 into 10 raised to power minus 6, because 10 to the power minus 3, the square is minus 6. Okay, तो पावर से पावर को मल्टीप्लाई किया, इट बिकम 10 raised to power minus 3, but the answer on the book is given as 2.62 into 10 raised to power minus 8. ऐसे कैसे बना ये आंसर. यहाँ से इस डेसिमल पॉइंट को मैंने कितनी प्लेस शिफ्ट किया, 1 2, मैंने 2 प्लेसेस इसको शिफ्ट कर दिया. तो 2 प्लेसेस शिफ्ट करके द नंबर विच वॉज 0.02 नाउ बिकम्स 2.62, मीन्स ये नंबर बड़ा हो गया.
अगर ये नंबर बड़ा हो गया तो मुझे इसकी पावर को कम करना पड़ेगा। कितना कम करूं? मैंने 2 प्लेसेस इसको शिफ्ट किया था, तो मैं 2 नंबर इस पावर को कम कर दूंगा। तो -6 में मैं -2 कर दूंगा, तो -6 -2 विल बिकम -8। तो -6 के कंपैरिजन में छोटा होता है, तो इस पावर को मैं छोटा कर दूंगा। लाइकवाइज हम अगर पावर को पॉइंट को इस साइड में शिफ्ट करें टुवार्ड्स द लेफ्ट साइड, देन इस पावर को हम उतना ही नंबर इंक्रीज कर देंगे। तो हम याद रखेंगे, जब भी डेसिमल पॉइंट को हम राइट वर्ड्स शिफ्ट करते हैं तो पावर को कम करते हैं, एंड वेन एवर वी टू शिफ्ट दिस decimal point towards left side, then what we do is we add that number in the power. Okay, तो बुक पे आपको आंसर ये मिलेगा और जो आप सॉल्व करोगे उससे आंसर आपको ये मिलेगा। बोथ द आंसर्स आर करेक्ट आंसर।